Okay, so we covered DHCP, we covered Telnet, NVT, we covered, if I'm not wrong, FTP, and I believe we have covered SMTP, IMAP, right? So अभी दो चीजें बाकी है एप्लीकेशन लेयर से, एंड देन वी विल सॉल्व द सम्स. एक जो है होमवर्क का सॉल्यूशन देगा, एक जो रजनी दिन से मेरे पीछे पड़ा है, मैं उसको बोलूंगा देखो आंसर वो आज कंप्लीट करते हैं. We will have question paper discussion session in the next lecture. That will be our last lecture on I believe on Saturday, right? Saturday morning. And then I continue with this AIDS for 2 lectures. So let me share the screen. Screen को share किया हुआ है. Let me talk about something called as DNS. So anyone, what's the idea of DNS? Or what's the problem of DNS? Domain name service. Domain name system or domain name service. It is not domain name server. It is domain name service, yeah, domain name system, not domain name server. So we generally call DNS server. So DNS server, DNS is domain name server. So it will sound as domain name server. So main intention of DNS क्या है? Main intention of DNS. Main intention of DNS क्या है? Start में हमने कवर किया DNS क्या है? क्या है DNS? आपको स्क्रीन पे दिखा. URL को IP एकदम परफेक्ट आंसर. URL को IP लो. अभी तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बेसिक ब्लॉक डायग्राम बना दिया. पर कहानी ऐसी है कि देयर आर ट्रिलियंस ऑफ वेबसाइट्स, ट्रिलियंस. जो रियली थिंक एक सिंगल डीएनएस के पास इतना बड़ा डेटाबेस है जिसमें ट्रिलियंस वेबसाइट का एंट्री है, एंड वो ट्रिलियंस वेबसाइट का एंट्री ढूंढने के लिए माइक्रोसेकंड्स में उनको रिप्लाई दे देता है. इट इज इम्पॉसिबल. सो नाउ लेट मी एक्सप्लेन हाउ दिस डीएनएस वर्क्स. तो डीएनएस काम कैसे करता है ये मुझे एक्सप्लेन करना है. तो मुझे सबसे पहले एक्सप्लेन करना है कि यूआरएल स्ट्रक्चर क्या होता है. जो यूआरएल स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? वी जनरली राइट www.yahoo.com, या यू विल फाइंड एड्रेस www.mails.yahoo.com, और यू विल फाइंड एड्रेस एज www.yahoo.co.in. एक चीज याद रखो, ये जो है ये फॉर्म फॉर्म या co.in, इसको हम कहते हैं टीएलडी. वी कॉल इट एज टीएलडी. ठीक है, टीएलडी स्टैंड्स फॉर टॉप लेवल डोमेन. व्हाट इज टीएलडी? टॉप लेवल डोमेन. और ये बाकी का पूरा पूरा पार्ट दिस कॉल्ड एलएलडी. सो एलएलडी स्टैंड्स फॉर लोअर लेवल डोमेन. ये एलएलडी जो तुम्हारा यूआरएल एड्रेस बन जाता है. नाउ टॉप लेवल डोमेन अलग अलग होते हैं. ठीक है, ये तो तुमको कौन दिखा है? कोई मुझे टॉप लेवल डोमेन बता सकता है क्या है? टॉप लेवल डोमेन और कोई एग्जांपल दे सकते हो. फॉर्म, कमर्शियल, जीओवी, गवर्नमेंट, एडू, एजुकेशनल, ओआरजी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, एमआईएल, मिलिट्री सर्विसेज, एसी, एकेडमिक्स, जो अपने यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है enu.ac.in, एसी इज एकेडमिक्स. Whenever you add a two letter suffix after top level domain, it represents वो वेबसाइट कौन से कंट्री के काम में आएगा. It's a two letter suffix. I in India, AG Singapore, GR Germany, FR France, US USA, UK, United Kingdom, ठीक है, MI Malaysia. तो ये सब जो है ना, it is talking about ये वेबसाइट कौन से कंट्री के लिए बना हुआ है. It is a country specific website. And as you are aware, this www, what is www full form? World Wide Web. World Wide Web का मतलब है वेब सर्वर. टेक्निकल लैंग्वेज में वर्ल्ड वाइड वेब इज रेफरिंग टू वेब सर्वर, जिसमें से याहू इज डोमेन एंड मेल्स इज सब डोमेन. याहू डोमेन होता है और मेल्स सब डोमेन होता है. तुम्हारा बेसिक टाइप्स अगर मैं बात करूं, बेसिक टाइप्स, तो तुम्हारा डीएनएस तीन तरीके का होता है. प्राइमरी डीएनएस, सेकेंडरी डीएनएस, ठीक है, एंड तीसरा होता है कैश डीएनएस. प्राइमरी डीएनएस, सेकेंडरी डीएनएस एंड कैश डीएनएस. कैश मतलब क्या? उसमें वो यूआरएल का आईपी रहेगा जो फ्रीक्वेंटली क्वेरीड है, एंड सेकेंडरी इज बैकअप ऑफ प्राइमरी. सो एग्जैक्ट रेप्लिका होता है. जो प्राइमरी में वही सेकेंडरी, प्राइमरी में सेकेंडरी. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड वन पर्टिकुलर पॉइंट. यूआरएल का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया. मैंने आपको ये भी बता दिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनएस सर्वर्स. एंड आपका ब्राउज़र हर यूआरएल के एंड में एक डॉट लगा देता है. तुम नहीं लगाते हो, ये ब्राउज़र लगाता है. दिस इज कॉल्ड एज एंड ऑफ यूआरएल, also called as null string. End of URL, also called as null string. ये null string कौन डाल देता है? ब्राउज़र. So when any URL ends with a dot, it is called as FQDN, fully qualified domain name. And when any URL doesn't end with a dot, it is called as PQDN, partially qualified DNS domain name. ठीक है, FQDN fully qualified and PQDN partially qualified. देखो एक ना कोई तो बताया मेरे को पता नहीं रहेगा. गर्ल्स जनरली नॉट मेक सच मिस्टेक्स. ये partially qualified का फुल फॉर्म एग्जाम में PQDN के बदले लिखा था partially qualified domain name. So partially कुछ नहीं है. So FQDN and PQDN. तो अभी द क्वेश्चन इज DNS एक्चुअली काम कैसे करता है? DNS एक्चुअली काम कैसे करता है? तो लेट मी एक्सप्लेन DNS एक्चुअली काम कैसे करता है. ठीक है, इधर ध्यान दो. ये है DNS और इधर है DNS का कैश. ठीक है, जिसमें फ्रीक्वेंटली विजिटेड यूआरएल आईपी है. ये मेरा क्लाइंट, ये पूछता है मुझे www.a.com, कॉम के एंड में क्या डॉट का मुझे आईपी. डीएनएस कैश में है नहीं, तो डीएनएस के पास ना, डीएनएस के पास सिर्फ और सिर्फ रूट सर्वर का आईपी है. रूट सर्वर. तो रूट सर्वर को बोलते हैं भाई काम कर, मुझे www.a.com का आईपी दे. रूट सर्वर का भाई मेरे पास ना सिर्फ और सिर्फ टीएलडी का आईपी, टीएलडी और टीएलडी टॉप लेवल डोमेन. तो ये क्या करता है? ये सिर्फ कॉम का आईपी देता है. तो अभी ये जाते हैं, ये डीएनएस जाता है कॉम सर्वर के पास, इसको बोलते हैं कॉम एनएस, कॉम नेम सर्वर. तो फिर फर्स्ट स्टेप में ये बोलते हैं www.a.com आईपी. कॉम मतलब मेरे पास अपना नहीं, मेरे पास डोमेन का आईपी. डोमेन मतलब डोमेन मतलब ए, क्योंकि इसके पास है डोमेन का आईपी. तो फिर स्टेटमेंट में वो एक आईपी देता है, डॉट ए का. और फिर मैं जाता हूं ए नेम सर्वर के पास, और ए नेम सर्वर के पास जाकर मुझे आईपी www. तो अभी ए नेम सर्वर को पता है उसने अपना वेबसाइट कहां पे स्टोर करके रखा है, कहां पे होस्ट करके रखा है. एक वेब सर्वर पे वेब सर्वर रहेगा, तो कोई एक वेब सर्वर को आईपी दे देता है. सो आईपी एंड फाइनली ये आईपी क्लाइंट को दिया जाता है. तो एक्चुअली इसका रिजल्ट कैसा होता है? सो अनम्यूटेड आंसर इज द URL www.vidyalaya.org. आई विल गो टू DNS. सो प्लीज अनम्यूट आंसर फ्रॉम DNS किसके पास होगा? root server रूट सर्वर किसका आईपी देगा? .org का. परफेक्ट आंसर. टॉप लेवल का ORG का, co.in, co.us, co.uk, फिर उसका आपको दिख रहा है आपका सर्चिंग एरो पर. फिर .org का आईपी मिला, फिर .org के बाद मुझे किसका आईपी मिला? विद्यालय का सर्वर. फिर विद्यालय के सर्वर के पास बोलूंगा भाई तू किधर वेबसाइट होस्ट कर आईपी दे. तो www इंडिकेट्स तेरा वेब सर्वर. तो वेब सर्वर का आईपी दिया है. इज दिस क्लियर? सर ANS है ना? हां, ये मतलब एक का नेम सर्वर. ओके वेब सर्वर. अरे एक का नेम तू नेम रिजॉल्व करना, वेबसाइट मांग रहा है. एनएस का नेम सर्वर. बट नाउ यू टेल मी, तुमको नहीं चाहिए DNS दिखा हर चीज में वर्ड आएगा. कंटिन्यू रूट का DNS को, फिर ORG का DNS, कॉम का DNS को, एक का DNS को, मतलब हर चीज में DNS को इन्वॉल्व क्यों करना चाहिए? इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज इटरेटिव. वी कॉल इट एज इटरेटिव प्रोसेस. तो क्या आपको इधर दिख रहा है? देयर इज वन मोर टाइप कॉल्ड एज रिकर्सिव. सो इधर ध्यान दो, ये इटरेटिव था, अभी आपको दिख रहा है. अभी रिकर्सिव में क्या है? स्पेलिंग अलग है, नॉट राउट, इट इज रूट RWT. DNS सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट करता है, सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट करता है. अभी मेरे को पता रूट सर्वर को कॉम का आईपी पता है ना, तो रूट सर्वर ही कॉम के पास जाता है. कॉम को एक याहू का आईपी पता है, तो कॉम ही एक के पास याहू के पास जाता है. याहू से आईपी लेके आता है, कॉम से रूट को देता है, और वो आईपी DNS को जाता है. तो आपको दिखा पहले वाले केस में रिक्वेस्ट रिप्लाई कौन करता था? DNS. अभी इट इज रिकर्सिव सर्वर कॉलिंग सर्वर कॉलिंग इटसेल्फ. तो रूट सर्वर कॉम का आईपी लेता है, कॉम के पास जाता है, कॉम के पास जाके याहू का आईपी लेता है, याहू के पास जाता है, याहू से आईपी लेके खुद के पास आता है, और कॉम वो आईपी रूट को देता है, रूट DNS को देता है. मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारा एक्चुअल रिप्लाई याहू के पास रेडी हो गया था? क्या तुम्हारा एक्चुअल रिप्लाई याहू नेम सर्वर के पास रेडी हो गया था? हां या ना? फाइनल रिप्लाई क्या है? www. तो www याहू के नेम सर्वर के पास रेडी हो गया.
तो वी गो फॉर टेक्निक कॉलेज ट्रांजिट चेक कर लो, सीधा याहू डीएनएस को रिप्लाई करता है, सीधा याहू डीएनएस को रिप्लाई करता है। इज दिस क्लियर? दिस इज व्हाट ट्रांजिटिंग। सो टेल मी, पहला वाला किस तरह, मैं रूट के पास जाऊंगा, रूट से रिप्लाई आएगा, मैं कॉम के पास जाऊंगा, कॉम से रिप्लाई आएगा, मैं याहू के पास जाऊंगा, याहू से रिप्लाई आएगा। सेकंड वाला कैसे करा, मैं रूट के पास जाऊंगा, रूट कॉम के पास जाएगा, कॉम याहू के पास जाएगा, याहू से रिप्लाई लेगा, वो रिप्लाई रूट को दे देगा, वो रिप्लाई डीएनएस को दे देगा। एंड लास्ट वाला क्या है, डीएनएस से रूट, रूट से कॉम, कॉम से याहू और याहू से डीएनएस। इज दिस क्लियर? नाउ कुछ आगे बढ़ो, चलो सुन लो यार। अभी द नेक्स्ट थिंग व्हाट वी टू अंडरस्टैंड इज, मेरी बात समझो, मेरी बात सुनो, जो नेक्स्ट थिंग हमको अंडरस्टैंड करनी है, डीएनएस हो गया, डीएनएस हो गया, अभी इट इज वेब सर्वर, मतलब एचटीटीपी, लास्ट प्रोटोकॉल है एचटीटीपी, व्हिच स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल काम कैसे करता है, एकदम सिंपल है। ठीक है, आपको डायग्राम दिख रहा है, यस, ब्राउज़र ने यूआरएल एंटर किया a.com, क्लाइंट वो यूआरएल डीएनएस को देता है, डीएनएस से आईपी लेता है और सर्वर को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजता है, पोर्ट नंबर 80 एचटीटीपी पोर्ट 80 पे चलता है। अगर सर्वर ने कनेक्शन एक्सेप्ट किया तो सेट नंबर 5 कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है। फिर क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है वेब सर्वर को यूजिंग अ प्रिमिटिव कॉल्ड एज गेट, गेट, कि मुझे वेब पेज दे। फिर सेट नंबर 7.1 सर्वर बताएगा वेब पेज कहां पे स्टोर रहेगा, तो वो इंडेक्स ओपन करता है, जिसको कहते हैं सर्वर टेबल। तो सर्वर टेबल में जाएगा a.com के वेब पेजेस कहां पे लिखे हैं, कहां पे स्टोर है, उसका पाथ मिलेगा। तो अपने हार्ड डिस्क में वो पाथ में जाएगा, जैसे यहां पे लिनक्स का पाथ है //www/a, उस पाथ में जाएगा हार्ड डिस्क के अंदर, वेब पेज को फेच करेगा। वेब पेज अगर स्टैटिक है तो डिलीट दे देगा, डायनामिक है तो डायनामिक प्रोसेस करेगा, डायनामिक प्रोसेस करेगा मतलब उसमें लेटेस्ट वैल्यू डालेगा और वेब पेज लाइन को दे देगा यूजिंग प्रिमिटिव कॉल्ड एज सेंड, और ये गेट सेंड का सिलसिला चलेगा एंड फाइनली कनेक्शन टर्मिनेट होगा। दिस इज द वर्किंग ऑफ वेब सर्वर या वर्किंग ऑफ एचटीटीपी, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। क्या किया, यूआरएल दो, वो यूआरएल डीएनएस को दो, डीएनएस से आईपी लो, उस आईपी को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो पोर्ट नंबर 80 पे, कनेक्शन अगर एक्सेप्ट किया तो दोनों के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा। सेंड अ रिक्वेस्ट यूजिंग गेट प्रिमिटिव, वो वेब पेज के लिए टेबल में ढूंढो उसका एड्रेस, उस एड्रेस में जाओ, उस एड्रेस में जाके वेब पेज फेच करो, फेच करके वो वेब पेज लाइन को दे दो यूजिंग सेंड प्रिमिटिव। ये गेट सेंड का सिलसिला चलेगा, जब तुम ब्राउज़र यूज करोगे कनेक्शन इज टर्मिनेटेड। Sir, डू why यू अंडरस्टैंड? गुड। why is this clear? वेयर यू गोइंग टू स्टोर द वेब पेजेस, इट विल बी स्टोर्ड इन द सर्वर दिस ना, Okay, table is in this one. टेबल इज इंडेक्स, Okay, sir. टेबल इज इंडेक्स, सो आई कम टू यू एंड आई टेल यू राजवीर एक काम कर, मुझे डेटा स्ट्रक्चर का नोटबुक दे, तो तेरे पास एक कबोर्ड है, तो उस कबोर्ड में डेटा स्ट्रक्चर का नोटबुक कहां पे है, वो तूने एक इंडेक्स में लिखा है, तो तू इंडेक्स ओपन करता है, डेटा स्ट्रक्चर ढूंढता है, उसके बाद में जाएगा रैक नंबर 3, कबोर्ड ओपन करता है, कबोर्ड जो हार्ड डिस्क रैक नंबर 3 में जाता है और वो नोटबुक फेच करता है, समझा? Yes, sir. तो ये डाउट, ये कंप्लीट होता है तुम्हारा कौन सा लेयर, Application. एप्लीकेशन, खत्म। दिस कंप्लीट्स योर लेयर कॉल्ड एज एप्लीकेशन लेयर। एनीवन हैव एनी डाउट? नो डाउट, आई प्रोसीड। ओके, सो लेट्स सी, वापस एक्सप्लेन करो। योर ब्राउज़र, यू ओपन, यू राइट www.yahoo.client sends yahoo.com to DNS, DNS से एक लिया जाता है या एक आईपी लिया जाता है, आईपी मिलने के बाद यू सेंड कनेक्शन रिक्वेस्ट पोर्ट नंबर 80, इफ इट्स एक्सेप्टेड द कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड, देन यू सेंड रिक्वेस्ट, ये वेब पेज मुझे चाहिए यूजिंग प्रिमिटिव कॉल्ड एज, देन सर्वर वो वेब पेज कहां पे स्टोर है उसके लिए इन्फो करता है, जिसको सर्वर टेबल कहते हैं। a.com का वेब पेज कहां पे है, तो पाथ में हार्ड डिस्क में जाता है, हार्ड डिस्क से वो पेज फेच करता है और वो वेब पेज लाइन को दे देता है यूजिंग सेंड प्रिमिटिव, और ये गेट सेंड का सिलसिला चलेगा एंड फाइनली कनेक्शन टर्मिनेट होगा। अब ओके, सो मैंने लास्ट ये जब नेटवर्क प्लेयर पढ़ा था तो मैंने तुमको कुछ होमवर्क दिया था, जो लास्ट वीक राजवीर एंड में डिस्कस कर रहा था। व्हाट वाज द होमवर्क, ये वाला होमवर्क। एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रांटेड अ ब्लॉक ऑफ एड्रेसेस स्टार्टिंग विद 105.8.71.0/24, ठीक है, सो एक्चुअली राजवीर ने पूरा सॉल्व किया है और लास्ट में मैंने सॉल्व किया था। किसी को इसमें कुछ डाउट है, लेट मी पुट इट दिस वे, एनीवन हैज डाउट इन दिस क्वेश्चन, एंड व्हाट आई विल चलो आई विल डू होमवर्क, जिन्होंने सॉल्व नहीं किया है, जिन्होंने सॉल्व नहीं किया है, टेक इट एज होमवर्क, सैटरडे का लेक्चर मुझे बताओ, पॉसिबली आई गिव ऑथराइजेशन ऑन सैटरडे, आई वांट यू टू सॉल्व इट। सो नाउ एवरीवन इन योर नोटबुक राइट डाउन IP version 6, IP version 6, and what you do is please revise IPv4 header, please revise IPv4 header, please revise IPv4 header, I'll give you 5 minutes because until unless you understand that आपको ये नहीं समझेगा।
So everyone in your notebook write an IP version 6. I told from of 32 bits to IP of 128 bits. IP of 32 bits to IP of 128 bits. To IP of 128 bits. Is this clear? ठीक है अभी हेडर पे ध्यान दो IP वर्जन 6 का हेडर ध्यान दो अब अगर देखोगे एवरी रो अगर आप देखोगे 4 बाइट्स है एवरी रो इज ऑफ 4 बाइट्स एंड लास्ट के दो रोज इज कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बाइट्स इसलिए यहां पे आपको दिखा देखो 4 रोज का कॉम्बिनेशन क्योंकि आपकी सोर्स IP एड्रेस 128 बिट्स है ठीक है अभी मुझे एक बात बताओ आपको दिखा VDR ये VDR 4 बिट्स का है उधर भी VDR 4 बिट्स का था ना इसलिए मैं करने लग गया था उधर भी VDR 4 बिट्स का था ना Yes. इधर भी 4 बिट्स है सो सेम एज IPv4 वापस से पढ़ाऊंगा मतलब इधर ट्रैफिक क्लास है जो 8 बिट्स का है ये ट्रैफिक क्लास को हम लोग कहते हैं DS डिफरेंशिएटेड सर्विसेज फिर ये नया है कोई तो 20 बिट्स का लो बताओ क्या है पेलोड लेंथ 16 बिट्स एक्जेक्टली सेम एज फोकल लेंथ नेक्स्ट है 8 बिट्स एक्जेक्टली सेम एज प्रोटोकॉल हॉप लिमिट 8 बिट्स एक्जेक्टली सेम एज TTL तो इसमें से एक चीज नहीं है कौन सी लो लेवल अब मुझे ऑप्शंस नहीं है फ्रैगमेंटेशन होता है पर ऑप्शन का फ्रैगमेंटेशन जब होते हैं दे विल बी एडेड एज एक्सटेंशन हेडर दे विल बी एडेड एज पार्ट ऑफ एक्सटेंशन हेडर इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर IPv6 हेडर सो यहां पे आप ध्यान दोगे दिस इज ए ठीक है दिस इज R1 दिस इज R2 दिस इज B ये इंग्लिश में बॉक्स में दिस इज R3 दिस इज R4 दिस इज B दिस इज R5 दिस इज R6 एंड दिस इज SI तो मेरे पास तीन पैकेट्स पैकेट 1 follows R1 R2 वाला पाथ पैकेट 2 follows R3 R4 वाला पाथ एंड पैकेट 3 follows R5 R6 वाला पाथ इज दिस क्लियर R5 R6 में कोई पैकेट ही नहीं था तो पहले कौन बचेगा R5 R6 तो मेरे को रिचेस फर्स्ट रिचेस सेकंड रिचेस थर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड ठीक है अभी क्या होता है अभी इफ आई सी द सिचुएशन वो भी में ना आपको रिअसेंबली करना पड़ेगा रिअसेंबली क्योंकि आउट ऑफ ऑर्डर वीडियो है अगर आप चाहते हो कि ये तीनों पैकेट एक ही पाथ फॉलो करें तो इन तीनों का लो लेवल वैल्यू सेम रहेगा सबसे लो लेवल क्या था x तो P1 जो पाथ फॉलो करेगा वही पाथ P2 फॉलो करेगा वही पाथ P3 फॉलो करेगा सो मतलब पहले P1 ही पहुंचेगा फिर P2 ही पहुंचेगा फिर P3 इज दिस क्लियर एनी डाउट Sir, but पहले P1 ही पहुंचेगा P2 पहुंचेगा तो मतलब वो कैसे ensure मुझे बोले एक ही पैकेट ना तो पहले P1 जाएगा उसके बाद P2 जाएगा उसके बाद P3 जाएगा बराबर Okay, I thought simultaneously जाएंगे ओके सिस्टम जाएगा Okay, sir. ठीक है सो ये पहले काम करो मुझे ये वाला हेडर ड्रॉ करो TCP और IPv6 हेडर हेडिंग दो और ये ड्रॉ करो ओके राइट नाउ VDR ब्रैकेट में सेम एज IPv4 VDR ब्रैकेट में सेम एज IPv4 ट्रैफिक क्लास ब्रैकेट में सेम एज डिफरेंशिएटेड सर्विसेज ट्रैफिक क्लास ब्रैकेट में सेम एज डिफरेंशिएटेड सर्विसेज सेम एज डिफरेंशिएटेड सर्विसेज फ्लो लेवल ये ड्रॉ करो दिस इज विदाउट फ्लो लेवल दिस इज विद फ्लो लेवल all packets with same flow level follows same path completed draw the diagram this is without flow level this is with flow level
Next write down payload length. Payload length. Same as same as same as total length. Same as total length. फिर लिखो next header same as protocol. Same as protocol. फिर लिखो off limit same as TTL. Same as TTL. उसके बाद show cyclic destination. That is what we select today. Next, write down transition strategies. Transition strategies. Transition strategies. So this is IPv6 हो क्या हुआ? ये IPv6 IPv6 आगे कुछ नहीं समझ में आ रहा है. सर ये IPv6 का पार्ट है हाँ IPv6 ट्रांजिशन स्ट्रेटजीज. हेडर खत्म हो गया ट्रांजिशन स्ट्रेटजीज. अच्छा हेडर के आजू बाजू लिखा हुआ ऑप्शंस एंड फ्रैगमेंटेशन इज मूव टू एक्सटेंशन हेडर. ऑप्शंस एंड फ्रैगमेंटेशन पार्ट इज मूव टू एक्सटेंशन हेडर. इज मूव टू एक्सटेंशन हेडर. एक्सटेंशन हेडर सर एक्स्ट्रा हेडर लगता है. ऑप्शंस एंड फ्रैगमेंटेशन पार्ट इज मूव टू एक्सटेंशन हेडर. वो जब भी लगा तभी अटैच करने का. नाउ यू गेट ट्रांजिशन स्ट्रेटजीज. ठीक है सबसे पहला हेडिंग डुअल स्टैक. तुम्हारा टीसीपी आईपी सूट क्या लगेगा ये लगेगा टीसीपी आईपी सूट का. ठीक है दिस इज योर होस्ट लेयर. दिस इज योर नेटवर्क लेयर एंड ऊपर इज योर ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन. देयर शुड बी सपोर्ट टू बोथ IPv4 and IPv6. सो एक ही चीज आएगा टीसीपी आईपी स्टैक आल्सो कॉल्ड एज टीसीपी आईपी सूट should support both IP versions. डायग्राम समझा इजी है. नेम है डुअल स्टैक. अभी दूसरा देखो. Sender is on which network? IPv6. Receiver is on which network? IPv6. But connecting part is with IPv4. तो इधर देखो ये डेटा बना रहा है. ये पेलोड पेलोड मत लिखो ये डेटा है. इस डेटा के ऊपर वो IPv6 का हेडर लगा है. जब वो IPv4 रीजन में जाता है ये पूरे चीज को IPv4 डेटा कंसीडर करके उसके ऊपर IPv4 का हेडर लगता है. तो नाउ इट इज ट्रीटिंग दिस एज अ डेटा. एंड फाइनली जब एग्जिट लेता है तो जो भेजा वही मिलता है. तो दिस इज योर डेटा. इज दिस क्लियर एवरीवन? डिड यू अंडरस्टैंड टनलिंग स्ट्रेटजी? सो व्हाट इज टनलिंग स्ट्रेटजी? Sender and receiver on same IP version. Example 6 and connecting the network on IP version 4. At sending side data is added with IPv6 header and IPv6 plus data is treated as a data by IPv4 region on which IPv4 header is added. At the end, IPv4 header is removed and IPv6 plus data is delivered. Is this clear? Any doubt? तो मुझे बताओ इधर क्या है अभी? इधर है IPv6 plus data. Here it is IPv6 plus data. और अभी यहाँ पे वो क्या करता है? इस पूरे पे क्या अप्लाई करता है? IPv4. And it is treating this as the data. Did you understand tunneling strategy? हाँ या ना? ठीक है. एंड तीसरा है जिसका नाम है हेडर ट्रांसलेशन. तो इधर क्या है? सेंडर ऑन वन नेटवर्क एग्जांपल IPv6 एंड रिसीवर ऑन IPv4. डेडिकेटेड राउटर विल डू हेडर ट्रांसलेशन. तो इधर मैं क्या करता है? IPv6 का डेटा प्लस हेडर. तो इधर क्या लगा IPv4 का डेटा. सो दिस हेडर ट्रांसलेशन का काम ये करता है तुम्हारा डेडिकेटेड राउटर. इज दिस क्लियर? एवरीवन इजी डिफिकल्ट? सेकंड एक्सप्लेन हेडर ट्रांसलेशन What happens with header translation? I am working with IPv6. You are working with IPv4. So when I send the packet, it will have IPv6 का header. But when you want to receive a packet, it will have IPv4 का header. So बीच में राउटर रहेगा जो IPv6 के header को IPv4 के header में कन्वर्ट करेगा या IPv4 का header IPv6 में कन्वर्ट. Is it clear? यस समझा ना? So if I talk about what exactly is the difference between IPv4 and IPv6? क्या डिफरेंस है? सबसे पहला डिफरेंस साइज 32 बिट्स. कितना है? 128 बिट्स. ठीक है. ऑप्शंस प्रेजेंट पार्ट ऑफ एक्सटेंशन हेडर. फ्रैगमेंटेशन फील्ड्स प्रेजेंट पार्ट ऑफ एक्सटेंशन हेडर. ठीक है. फिर लो लेवल एब्सेंट प्रेजेंट. ठीक है. फिर राउटर लिमिटिंग. इट इज डन यूजिंग TTL. हियर इट इज डन यूजिंग ऑफ लिमिट. ठीक है. एरर डिटेक्शन वी यूज चेकसम. ये सिक्योर है. दैट इज इट यूजेस एंड टू एंड एन्क्रिप्शन. सो एरर आएगा नहीं क्योंकि कुछ चेंज नहीं होगा. ठीक है. फिर यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करने का राइट फिगर ए राइट फिगर बी. फिगर में एक आएगा फिगर में फिगर में 4 आएगा फिगर बी में 6 आएगा. इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है. तो तीन स्ट्रेटजीज है. कौन सी तीन स्ट्रेटजीज है? सबसे पहला स्ट्रेटजी का नाम है डुअल स्टैक. TCP IP स्टैक शुड सपोर्ट बोथ IP वर्जन्स. ठीक है. दूसरा कौन सा है? टनलिंग. तीसरा है हेडर ट्रांसलेशन एंड लास्ट वन है डिफरेंस बताया. सो फटाफट कंप्लीट कर देगा. जैसे ही हो जाएगा टेल मी आई विल गो टू नेक्स्ट. डाउट आएगा अनम्यूट करना.
हो गया, चलिए proceed. Next slide. The name of this was fuel stack. Next, tunneling strategy. I hope this is complete. ये हम लिख
So अभी if you see we have completed everything. ठीक है, we have covered every damn thing. ठीक है, कुछ सीएस में कुछ सम्स है, वो लोग सैटरडे देखते हैं एंड देन आई कंटिन्यू विद द एआईडीएस एंड एआई मीटिंग. So that will see on Saturday. So Saturday maybe 1.5 hour computers and 1.5 hours AIS AI. Computer class lecture रहेगा ये Saturday. ठीक है, so any doubts if you have this by this Saturday you can clear. Yeah, I'll be sharing my number also. You can ping me if you have any doubt or something. And again we'll be meeting next semester for two subjects. Cryptography and system security again which has a mathematical part and artificial intelligence which is entirely a logical based subject. So next semester में हम ये दो subjects मिलने वाले हैं. So anyway, तो next semester देखते हैं next semester अभी as of now we'll conclude with today's lecture. ठीक है, and we'll meet on Saturday. Saturday टाइम क्या हुआ है? टाइम तो Saturday 11 o'clock. हाँ, वो रजनी का डाउट पहले सॉल्व करते हैं. रुको पहले रजनी का डाउट सॉल्व करते हैं. सबसे पहली बात ये वाला सम और फिर रजनी ने डाउट पूछा था. ये वाला सम निकाल लेते हैं. राइट टू वेट टिल Saturday. ठीक है, we have time. Then write to wait till Saturday. So 105.8.71.0/24. Now you tell me what is the indication of /24? 24 bits net ID. Therefore 32 minus 24 8 bits host ID. Therefore 2:8 devices equals to 256. ठीक है, मुझे बोला organization wanted to distribute this block to 11 subnets. 11 subnets 3 plus 4 plus 4. वो 11 subnets को भूल जाओ. अब वो पहला कितना चाहिए? 16 addresses. ठीक है, ये तो तुमको समझा. फिर लिखने का first 16 addresses. Logically 16 devices. 16 devices बोला तो I need 2:4. 16. ठीक है, therefore I need 4 bits का host ID. Therefore how many bits are remaining with net ID? 32 minus 4 which is 28. Therefore /28 becomes my slash notation for the first group. First group में क्या बोला है? 4 3 medium sized businesses each having 16 addresses. 3 medium sized businesses. Starting address आएगा तुमको पता है, starting address मिलेगा 105.8.71 105.8.71.0/28. 16 address ना, ये जाएगा पूरा का पूरा कहाँ जाएगा? कहाँ तक जाएगा? 105.8.71.15/28. ठीक है, ये गया एक बिजनेस को. दूसरे बिजनेस को कहाँ निकालूंगा? 105.8.71.16/28 से 105.8.71.16 में 16 आएगा -1 करो 31 तक जाएगा /28. एंड तीसरा बिजनेस कहाँ से निकालूंगा बताओ? 105.8.71.32 32 में 16 आएगा -1 करो 105.8.71.47/28. ये बन गया मेरा फर्स्ट वन. अभी मैं सेकंड में सॉल्व करूं. सेकंड में तुमने 32 बोला ना, मतलब 5 बिट्स लगेंगे. 32 बोला मतलब 5 लगेंगे 2:5. 32 - 4 मतलब स्लैश नोटेशन का बताओ. /27. समझा /27 कैसे आया? ठीक है, चलो तुम थोड़ा रीजन करो. सेकंड वाला मुझे बताओ. सेकंड वाला मुझे बताओ क्या लिखूं इधर? 32 एड्रेसेस 2:5. 5 बोला तो 32 - 5 27 तो बनता है 27. और कितने एड्रेसेस चाहिए? 32 एड्रेसेस 4 बिजनेस. 32 के 4 बिजनेस. 4 बिजनेस. बिजनेस 1 बिजनेस 2 बिजनेस 3 बिजनेस 4. ठीक है, और इसको कंटिन्यू करना है 47 से कंटिन्यू करना है 47. मतलब इधर क्या आएगा? 105.8.71.48/27. 2 48 में 32 ऐड करो. कितना होता है? 48 में 32 ऐड करो कितना होता है? -1 करो. 105.8.71. परफेक्ट आंसर. दूसरा कहां से चालू हुआ बताओ? डॉट 80 से 80 32 ऐड करो -1 करो कितना होगा? डॉट 80 + 32 112 ना -1 फिर चालू होगा 112/27 से 112 में 32 ऐड करो 140 -1 143 ठीक है, और फिर 143 27 से लेके 144 हाँ 144 सॉरी 144 से लेके 32 ऐड करो 175 175 तक जाएगा -1 करके. ठीक है, ये तुमको मिल गया सेकंड. अभी थर्ड के लिए क्या चाहिए बताओ? थर्ड के लिए क्या चाहिए? थर्ड के लिए क्या चाहिए? कंपनी से हाउस कुछ भी हो ना, सबने तो लिखा ही. हाँ. तो ये होगा 3 और ये होगा 4 एड्रेसेस. 4 एड्रेसेस मतलब 2:2. तो इधर मुझे लगेगा 2 बिट्स. ये होगा 32 - 2 तो इधर जाएगा 30. मैं स्लैश नोटेशन मिलेगा 30. एंड कितने चाहिए? 4 ही हाउस होल्ड है एंड चारों को लगता है 4 एड्रेसेस. तो क्या आएगा इधर? 1 2 3 4 105 क्या एड्रेस था? ये वाला एड्रेस 105.8.71 डॉट कहां से चालू होगा? 176 /30 176 से 4 ऐड करो -1 179 बराबर. हाँ. ये होगा 180 से 180 + 4 - 1 183. ये होगा 184 से 184 + 4 - 1 187. एंड ये होगा 188 188 + 4 - 1 191 /30. ये बन गया थर्ड का सॉल्यूशन. और फिर क्या बोला गया है? फिर क्या बोला गया है कि देयरफॉर टोटल एड्रेसेस अवेलेबल कितने आएंगे? 256 माइनस कितने चले गए? कितने चले गए? कितने चले गए? पहला था 16 × 3 प्लस 32 × 4 + 4 × 4 32 × 4 + 4 × 4 तो 256 माइनस लॉजिकली 192 तो कितना बचा है? 64. दिस इज योर सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम. ठीक है, ले लो लिख लो. मैंने कंप्लीटेड दिस. इतना लिखो हो जाएगा इसको.
मैं राजू ने एक क्वेश्चन पूछा था, इतना इजी क्वेश्चन दूंगा नहीं, तो क्वेश्चन पीछे पड़ा। थोड़ा मेहनत करो। क्वेश्चन ये है कि मैंने हल्का बोले कि हैमिंग कोड जो है हैमिंग कोड, इट ओनली रेक्टिफाइज, detects and corrects single bit error. He is asking, what if, or there is a question to him, how to detect multi-bit error using Hamming code. Multi-bit error नहीं होगा, 2-bit error using Hamming code. तो 2-bit error using Hamming code अगर आपको करना है, so you should be aware of one concept. That concept is actually called as SIGDET. Now what does the SIGDET indicate? Single error correction, double error detection. Single error correction, double error detection. SIGDET. So before Saturday, just check what is SIGDET. Single error correction, double error detection. I'll teach you, but then I want थोड़ा effort slow and SIGDET क्या देखो. ठीक है, अभी मेरी बात सुन लो. अभी I need only max to max 1 hour for computers. 1 hour for computers. तो सैटरडे हमने जैसे एक्स्ट्रा रखा है, सैटरडे हम लोग देखते हैं 1 hour, एंड देन आई नीड अराउंड 3 hours to deal with AIDS AIMS. So maybe next week कैसे प्लान करेंगे we'll decide on Saturday, but this Saturday we'll meet around 11 o'clock. ठीक है, and if not this Saturday we'll meet on next Saturday, whatever is comfortable for you. If we meet next Saturday, again the lecture will be in the morning around 10:30. So ये Saturday रखेंगे, next Saturday वो बताओ मुझे. ये Saturday ठीक है, तो this Saturday we'll meet morning 10:30. Everyone will meet at 10:30. This Saturday morning 10:30. ठीक है, सिग्नल क्या है, ढूंढ के रखो. So till then take care, stay safe and good night everyone. Bye. This Saturday morning 10:30. Bye everyone. Najib bhai, before you will be free. हेलो राजू, बोलतो ना पूर्ण बोल, फुल झालं तर माइक बंद कर. आणि तू बोलता माइक बंद कर, तुला लास्ट स्टेटमेंट ऐकतो. Sir, has a solution. हम लोग सांगितलं ना सिग्नल शोधा, तुला एवढी दिवस दिला, आता सगळं दिलं. Okay, okay. Yes. And sir, the second one which I have sent you. ते त्या दिवशी सांगतो. Okay, sir. चल we'll conclude. We'll meet on Saturday at 10:30. Bye. Good night everyone. वैभव, Yes, sir. मॅडम we can conclude या सॅटर्डेला सकाळी 10:30 वाजता. See you, sir. CNC. Okay, okay. Bye, sir. Good night. Bye. Good night. Good morning everyone. Happy Dasara to everyone. We will have extra lecture regarding the same. Fazal, Krish, this PDF. So उसके सब okay, so if at all there is one question, either the question which comes, it's talking about physical LMSA, one of the tables. So I've already uploaded the file in the drive, but I will also once go through what exactly are the features. So I'll just share the handwritten content of physical LMSA. So is the screen visible? Yes, sir. So physical, basically there are three things that you need to focus upon: guided media and unguided media. So guided media is wired medium. Unguided media is talking about wireless media. So guided media, you get twisted pair cable.
उसमें दो तरीके के केबल्स होते हैं, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर एंड अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर. सो आई सीन इन दिस पीडीएफ. सो उसके सब एडवांटेजेस क्या है, बैंडविड्थ कम है, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर अनशील्डेड में क्या डिफरेंस है. तो जनरली शील्डेड ट्विस्टेड पेयर उस एरिया में यूज करते हैं जहां नॉइज बहुत ज्यादा है, जैसे एयरपोर्ट. देयर यू शुड गो फॉर शील्डेड. द मेन रीजन फॉर शील्डेड इज टू अवॉइड unnecessary addition of error or noise. देन कोएक्सियल केबल वो केबल होता है जो केबल टीवी में यूज होता है. सो अ सिंगल इनर कोर ऑफ कॉपर कंडक्टर रहता है जिससे वो सिग्नल कैरी करता है. सो जो तुम्हारा RJ45 कनेक्शन वाला रहता है वो तुम्हारा स्टैंडर्ड ट्विस्टेड पेयर केबल है जो टेलीफोन लाइन वाला देखते हैं. ठीक है, but today we are moving towards the concept of fiber optics, where there is a glass cladding, and through light source you are sending the signal which is getting transmitted because of the reflection of the glass. Okay, and fiber optics is said to be the most fastest as compared to twisted pair and your coaxial. And then three parts of unguided media that you should be aware: radio waves, microwaves, ठीक है, जिसका frequency ज़्यादा है, and then we are focusing upon this infrared and Bluetooth. Then there is a concept of so this part मतलब इसमें सिखाने जैसा कुछ नहीं है, इसलिए मैंने ऑलरेडी अपना शेयर कर दिया है. ठीक है, but then here there is one important concept which talks about packet switching and circuit switching. So packet switching is what? Packet switching is it is using a concept called store and forward. Store and forward. So it goes to a router, it is stored in the router, it checks the address, forwarded to the next router or next node. But similarly, there is a concept of circuit switching. So circuit switching is like a virtual private network. There is a dedicated path between source and a destination being reserved for that particular session. So kind of a telephone line is an example of circuit switching. Internet is an example of packet switching. So ये सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग और ये जो फिजिकल लेवल है वो एक बार गो थ्रू करके जाइए. ठीक है, अभी जो रजनी डाउट पूछा था इतने दिनों से, जो मैंने लास्ट में आपको लिख के दिया था कि थोड़ा सा ढूंढो व्हाट इज दिस सेगमेंट. तो रजनी वाज कॉन्स्टेंटली आस्किंग सर हाउ हैमिंग कोड करेक्ट्स वन बिट एरर, बट ही हैड अ क्वेश्चन दैट हैमिंग कोड सो इट कैन करेक्ट अ सिंगल बिट एरर. सो सिंगल एरर करेक्शन एंड डबल एरर डिटेक्शन, इसलिए उसका नाम था सेगमेंट. तो सेगमेंट का क्या है कॉन्सेप्ट, आई एक्सप्लेन. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर सेगमेंट. या सो सेगमेंट का कंडीशन ये है, देयर आर बेसिकली थ्री कंडीशंस फॉर सेगमेंट. ठीक है, हम रिसीविंग एंड पे डू यू रिमेंबर पैरिटी कैलकुलेट करते हैं. वी कैलकुलेट द पैरिटी. सो व्हेन वी कैलकुलेट द पैरिटी ऑफ दोस बिट्स, सो रिसीविंग साइड पे पैरिटी ऑल जीरो इंडिकेट्स व्हाट, पैरिटी ऑल जीरो इंडिकेट्स व्हाट, एरर या नो एरर, नो एरर, बराबर. बट इफ आई से पैरिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो इंडिकेट्स व्हाट, देयर इज एरर. परफेक्ट आंसर. हाउ टू टैकल, चलो ये अपने को क्या बताता है, ये अपने को क्या बताता है एरर है या एरर नहीं. डिटेक्शन. अभी देयर इज वन मोर कांसेप्ट दैट इज कैलकुलेशन ऑफ हैमिंग डेटा. we call it as calculation of Hamming data. So now you call this as P1 and calculation of Hamming data is called as P2. So P2 is XOR of Hamming data. हम लोग इसका मतलब क्या बता दो. एक चीज याद रखो, ये रूल याद रखो, P1 equals to 0 and P2 equals to 0, no error. ये याद रखो. ठीक है. सेकंड रूल, P1 not equals to 0, ठीक है, and P2 equals to 1, that is 1 bit error. And तीसरा रूल याद रखो, P1 not equals to 0 and P2 equals to 0, that means 2 bits error. ये याद रखो. ये याद रखोगे तो पूरा तुमको कॉन्सेप्ट समझेगा कि तुम्हारे डेटा में एरर है या नहीं है, तो 1 बिट है या 2 बिट्स है. तो अभी तुम सिर्फ तुम्हारे नोटबुक में किधर तो लिख के रखो हैमिंग कोड फॉर सेगडेड, हैमिंग कोड फॉर सेगडेड, सिंगल एरर करेक्शन एंड डबल एरर डिटेक्शन, और ये लिख के रखो. हाँ मतलब ये सम लूंगा तो आपको क्लियर होगा. ये क्राइटेरिया है कि सिंगल बिट एरर है, मल्टीबिट एरर है, तो 2 बिट एरर है या नो एरर है. तो कहा है दास कि ये कैलकुलेशन ऑफ हैमिंग कोड सेकंड स्टेप है. हैमिंग कोड जो हमने देखा है वो दैट इज फॉर एरर डिटेक्शन एंड डिटेक्शन, डिटेक्शन एंड करेक्शन. हियर द क्वेश्चन वाज 2 बिट एरर है तो कैसे पकड़ा जाएगा कि 2 बिट एरर है. सबका ये लिखिए होगा. ओके, सो राइट डाउन इन द गिवन रिसीव्ड हैमिंग कोड, in the given received Hamming code, check whether it has error of 1 bit, 2 bits or no error.
और नो एरर। ठीक है, ये अगर आप देखोगे ये 8 बिट्स हुआ। तो अगर ये 8 बिट्स हुआ मतलब अपना फ्रेम फॉर्मेट 8 बिट्स का रहेगा। इन द गिवन हैमिंग कोड चेक वेदर देयर इज अ सिंगल बिट एरर, 2 बिट्स एरर, नो एरर। सो इफ यू रिमेंबर हैमिंग कोड, या फिर ऐसा डेटा फॉर्मेट मिलता था ये ऐसा। ये मेरा डेटा फॉर्मेट हुआ करता था, वो 11 बिट्स का था। अब ये टोटल 8 बिट्स है। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ ऐसा, तो इधर क्या बनेगा? दिस इज 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, तो ये इधर लिख लो 1 0 0 1 1 0 0 1। किसी को याद रहेगा तो मैं बताओ कि इसमें से रिडंडेंट बिट्स कौन से हैं? R1 R2 R4 R8। बराबर। तो मुझे अभी फाइंड करना पड़ेगा R1 का फैमिली, R2 का फैमिली, R4 का फैमिली एंड R8 का फैमिली, बराबर ना? यस। तो मुझे बताओगे R1 के फैमिली में किसको देखना पड़ेगा? 1 3 5 7। R2 के फैमिली में 2 3 6 7। R4 का फैमिली 4 5 6 एंड R8 का फैमिली 8 9 10 11 अभी तुम्हारे R8 का फैमिली सिर्फ 8 ही है ना? हाँ। ठीक है, तो 1 3 5 7 क्या क्या मेरे पास 1 3 5 7 में? 1 में 1 है, 3 में 0 है, 5 में 1 है, 7 में 0 है। तो इसका पैरिटी कितना आया? 0। 2 3 6 7, 2 में 0, 3 में 0, 6 में 0, 7 में 0, पैरिटी 0। और ये 4 5 6 सॉरी 4 5 6 7 क्या आएगा? 1 1 0 0 अगेन 0। अब ये क्वेश्चन आता है कि सर वो R8 में 1 आएगा तो लॉजिकली पैरिटी 1 आना चाहिए, मैं ठीक। पर ऐसा सिंगल बिट का हम लोग कभी भी कैलकुलेशन नहीं करते। तो ऐसे सब में जब ऐसा लास्ट वाला जो 8 वाला रहेगा, अगर सिंगल बिट है उसको इग्नोर कर देना, उसको इग्नोर कर देना। तो अभी मुझे बताओ, मेरा सब पैरिटी बिट्स 0 0 0 है, मतलब लॉजिकली मेरा P1 का वैल्यू 0 है, 0 0 0 0 मतलब ऊपर कौन सा टोक 4 2 1 ऑल 0 मतलब 0। तो मुझे बताओ देयरफॉर P2 का वैल्यू क्या है? P2 इज XOR ऑफ द गिवन डेटा 1 0 0 1 1 0 0 1। सो XOR आपको पता है ना? XOR का क्या रहता है? सेम आएगा तो 0 हाँ, तो अभी टोटल कितने वंस है? 4 4 वंस है। इवन वंस है, इवन वंस, तो योर आंसर इज ऑलवेज 0। सो यहाँ पे देखोगे देयरफॉर P1 इक्वल्स टू 0 एंड P2 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर नो एरर, ये लिख दिया था मैंने, नो एरर। इज दिस क्लियर? यस ओके, सेम सब रिपीट करते हैं, सेम सब, सिर्फ थोड़ा सा करेक्शन करते हैं या थोड़ा चेंज करते हैं इसमें। वो ये है कि ये जो डेटा है 1 0 0 1 1 0 0 1, इसको मैं 0 कर देता हूँ। अगर ये 0 हुआ तो इधर 0 आ जाएगा। ठीक है, विल चेंजिंग 1 3 5 7 नो, 2 3 6 7 नो, 4 5 6 7 यस। तो इधर मेरा फॉर श्योर आंसर क्या बनेगा? 1। बराबर, तो मेरा इधर वैल्यू क्या बनेगा? 1 0 0, तो मेरा वैल्यू क्या बनेगा? 4। एंड व्हेनेवर यू एक्सॉर्ट दिस, सो हाउ मेनी वंस यू सी इवन या ऑड? इवन नंबर ऑफ वंस या ऑड नंबर ऑफ वंस? और ऑड नंबर ऑफ वंस है, सो ऑड नंबर ऑफ वंस एक्सॉर्ट करोगे तो 1 नहीं मिलेगा। सो P1 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब P1 इज अ 4 एंड P2 इज 1। इसका क्या मतलब है? एरर इज ऑफ सिंगल बिट, देयरफॉर गो टू bit of P1 that is 4 and flip the bit and flip the bit। तो 4 बिट पे ये रहा था, 4 बिट पे जाओ, 0 का 1 करो या 1 का 0 करो। तो रिमेनिंग एक्सॉर किसके साथ किया? इट इज एक्चुअली फर्स्ट 2 बिट्स का एक्सॉर, उसका रिजल्ट एक्सॉर विद दिस, उसका रिजल्ट एक्सॉर विद दिस, उसका रिजल्ट एक्सॉर विद दिस। उससे अच्छा क्या करने का शॉर्टकट तरीका? इफ यू हैव इवन नंबर ऑफ वंस एक्सॉर 0 आएगा, इफ यू हैव ऑड नंबर ऑफ वंस एक्सॉर 1 आएगा। ठीक है, चलो हम लोग अभी लेट्स चेक इट फॉर 2 बिट्स। तो अभी 2 बिट्स में अज्यूम करो 2 बिट्स में चेंज ये है कि इधर 0 है, ये 0 है, सो 1 0 0 1 एंड 0 1 0 1। तो ये 0 है, ये 0 1 0 1, दो बिट्स है, देखो बिट 4 एंड बिट 3। तो इधर और एक 1 आएगा तो ये 1 बनेगा, इधर भी 1 आएगा तो ये 1 बनेगा, और इधर 0 आएगा तो भी ये 1 बनेगा। तो लॉजिकली स्पीकिंग मुझे क्या मिला? मुझे मिला 1 1 एंड 1, और ये मेरे को पता है 7, जो गलत है फॉर P1। एंड व्हेन यू एक्सॉर, ये मेरा 0 है इधर, इधर मेरा 1 है, हाउ मेनी नंबर ऑफ वंस यू सी? 4 नंबर ऑफ वंस, मतलब एक्सॉर 0 आएगा। सो P1 इज 7 एंड P2 इज 0। तो मुझे पता है ना, ऊपर वाले रूल में देखो, मैंने लिख के दिया आपको, P1 नॉन 0 बट P2 0, मतलब एरर इज ऑफ डबल बिट। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, चलो ये लिख के 3 सम सॉल्व किए, ये लिख के मुझे पता है, छोड़ दो। राजनील हैप्पी? yes sir, though I lost marks in PT1 but मोहम्मद फहद, your Hamming code only works for correction of 1 bit, so it cannot correct 2 bits error. So it is single error correction, double error detection. sir बोल। sir for single bit error, अगर single bit error correct करने बोला है तो we should generate an n bit word as per the question that I have sent कि Yes, उसी में correct करना है। करेंगे क्वेश्चन देख लेते हैं। वो करना पड़ेगा तुमको। क्या इसको सर? फोकसिंग फ्रॉम गेट पॉइंट ऑफ व्यू इट्स फाइन, एग्जाम में ये सब नहीं आएगा। बट ये 10 बिट डेटा पर जो दिया है एज इट इज जैसे मैंने अभी सॉल्व किया एज इट सॉल्व करना है।
आंसर सिंगल बिट एरर के लिए मैंने एक्जैक्टली वही किया कि इसमें जो रॉन्ग बिट है उसको फ्लिप किया, बट इन द एग्जाम शी टोल्ड मी कि इनको कि इसको एन बिट वर्ड जनरेट करना है, मतलब जो हम इसको ऐड करते हैं ना, पैरिटी बिट्स इंसर्ट करते हैं वो वाला तो ये मेथड। पैरिटी, ये क्योंकि तुम्हारा क्वेश्चन थोड़ा अनक्लियर है, अगर ये सिर्फ डेटा दिया हुआ है तो तुमको उसको हैंडल नहीं करना पड़ेगा। अगर रिसीविंग साइड है तो कंटेंट से हैंडल को। हाँ सर, और लैंग्वेज यही था जो मैंने आपको टाइप करके भेजा ना, दिस वाज द सेम लैंग्वेज, और So मैंने interpretation is whenever there is a question for single bit or double bit, the Hamming code with data is given. नहीं तो अगर ये सिर्फ डेटा है तो मुझे मेंशन करना चाहिए कि कैलकुलेट हैमिंग कोड। तो 2 रेज़ टू r ग्रेटर इक्वल टू m+r + 1 का एड्रेस वैल्यू को हैमिंग करना पड़ेगा। और फिर उस नए एन बिट हैमिंग कोड में हमको ये करना यस है। यस। ओके सर, मैंने जो मैं अभी वाला मेथड फॉलो किया था, तो आई गॉट लाइक रॉन्ग। द क्वेश्चन इटसेल्फ इज एम्बिगुअस इन दैट। हो गया था छोड़ा। तो कंप्यूटर द एंटायर सिलेबस इज ओवर। ठीक है, सो एवरीथिंग इज देयर ऑन योर ड्राइव, जो लिख के नहीं दिया है। ठीक है, अगेन नेक्स्ट सेमेस्टर डेफिनेटली मीट फॉर द सब्जेक्ट ऑफ क्रिप्टोग्राफी सिस्टम सिक्योरिटी, अगेन काइंड ऑफ मैथमेटिकल सब्जेक्ट एंड एआई, entirely logic based subject, artificial intelligence. So I just share my number if you have any doubt. If I don't, just when you call, please tell me your name and the batch, say CN online, or if I don't pick up, just ping me. So number I'm sharing. And AIDS people will have a lecture on next Saturday at 10:30. AIDS AI people will have lecture next Saturday at 10:30 in the morning. Okay, I hope AI में AIDS कितने लोगों ने ज्वाइन किया है? I think so मैसेज मुझे एक से मिला कि I'm from AIDS and if I'm not wrong it is Taha. Taha is from AI. So rest I believe are from computers and computer syllabus is over. Okay, so Taha, is it fine? Next Saturday 10:30. Okay, fine, then let's meet next Saturday. And Monica, you'll get a message if at all I'm able to make it on Thursday. On Wednesday evening you'll get a message. Regardless, the lecture is on Thursday or Saturday. If I'm able to make it on Thursday, keep it on Thursday itself. So you will all AI people will get a message regarding the same on Wednesday. So if you don't have any doubt, we'll leave. Happy Dasara to everyone. All the very best. Do well and let's meet in the next semester again. I hope I've tried my level best and hope the language of C and the concepts are crystal clear to everyone. It was really nice teaching all of you. Hoping to see all of you again in semester 6. Thank you, Divya. Thank you so much. All the very best. Yes, I got it. Great. Learning. Yes, sir. Thank you, sir. It was great teaching us. Thank you, Learning. sir. Thank you so much. Thank you. All the best. So if you don't have any doubt, let's conclude. Happy Dasara. Have a good day ahead. All the best for all your exams. Do well and score good. Bye sir. Vaibhav. Bye. Bye. Vaibhav. Bye, Divya. Bye, Taha. Most welcome, sir. Most welcome. सॉरी, बोला। एंड जो सर मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन भेजा था ना, उसमें हाँ। So if you see the second question, it is talking about, I believe, कुछ तो Windows size के बारे में बात कर रहा है, right? So frame numbering and everything. So the question is, total frames to be sent at 20. The number of bits are 4. So 4 मतलब 2:4. So if that 2:4 मतलब 16 तक जाएगा. So maximum sequence number will be 2:4. So maximum sequence number अगर 2:4 है, तो तुम्हारा sequence number 0 to 15 होगा, and then there will be a modulo with 16. So again the 16th frame का जो भी number है या 17th frame का जो भी number है, will start from 0. So 0 to 15 the sequence number will be 0, 1, 2, 3, 4, 5. 16 से again the sequence number will wrap to 0, 1, 2, 3. ओके ठीक है. So thank you, Ritvik. So I'll just put on the chat. Sequence number ये है, समझा ना?
And what is the next question? Size of sender and receiver for go backend. Now go backend मुझे बता रजनी. If I send 1 2 3 4 5 and there is error 3, so what it does? Will it keep 4 5 and give a negative acknowledgement for 3? No, it will reject 3 4 5. So Yes. उसके पास accept करने के लिए एक ही विंडो है. Accept करने के लिए ना उसके पास एक ही विंडो है. So receiver window क्या रहेगा? Receiver window will be 1 in go backend, but sender window will be 2:4 minus 1. So for go backend, sender window will be 2:4 4 क्योंकि 4 बिट्स दिए हुए. So logically 2:4 minus 1 and the receiver will be 1. Why 1? क्योंकि एक भी आया तो आगे का सब रिजेक्ट करते हैं. But if I Yes. talk about selective repeat, your sender window will be 2:4 minus 1 as well as your receiver window will be same 2:4 minus 1. Now why 2:4 minus 1? एरर आया तो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट वो पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए जाता है, पेन के लिए जाता है, बाकी का फिर वो एक्सेप्ट करता है. Yes. Yes. ठीक है. Okay, sir. Thank you. एक सेकंड ये सिलेक्टिव रिपीट में सॉरी इट इज आई नीड टू वेरीफाई बट आई थिंक इट इज 2:4 डिवाइड बाय 2. विंडो साइज हाफ हो जाता है. 2:4 डिवाइड बाय 2 फॉर बोथ सेंडर एंड रिसीवर. 2:4 डिवाइड बाय 2 हां इट हैज टू बी डिवाइड बाय 2 सिलेक्टिव. ठीक है चलो कंक्लूड बाय 1 गुड. थैंक यू. वैभव एस कनिस वैभव एस. Generally comes in your syllabus as well. Generally comes in your exam. No one join to laptop. The first topic that generally comes in your syllabus as well. Generally comes in your exam. So I'm not only taking from an exam point of view, but also from a knowledge point of view. So the enterprise network design. Again, I'm asking Rohan. Am I Yes, sir. audible? Yes, yes, you are. Yes, now okay. What topic is this? Yes, sir. Okay, we will end up the lecture share project. Okay. Okay, So the sir. enterprise network design is talking about something called as service-oriented architecture, which is also called as SONA framework. So when I'm talking about enterprise network design, it is talking about a network design not of a specific classroom or of a lab or of 2 labs or of 3 labs. It is talking about the entire network of the given infrastructure. And for that, Cisco has suggested a 3-layer architecture. So before understanding the 3-layer architecture, let us understand the concept of SONA, what is service-oriented network architecture. Service-oriented network architecture is basically focusing upon 3 important layers. The infrastructure layer, where the actual components like server, clients, routers, switches, you can see. Interactive service layer, which allows the end user sitting at the above application layer to directly interact with all of the data which is stored in the network layer, servers, storages, and so on. And finally, the application layer. The application layer either contains the various business applications, the individual applications, or the collaborative applications stored on the cloud. So the collaborative applications, like when I'm taking an example of GitHub, allows you to make modification sitting at anywhere, any part of the country, and you'll be able to access the cloud remotely and synchronously. That is a collaborative application. So these 3 layers, what you see, is nothing but your SONA, suggested by Cisco. So network infrastructure layer talking about all the devices, interactive layer talking about acting as a middleware between the user who is interacting through application layer or collaboration layer with the data which is stored on the server or on the cloud called as storage. And then finally the application layer, either we have a business application or we have the collaborative applications. Yes, sir. Yes, so I believe ये तीनों चीजें आपको समझा. And when this question generally comes, either there is a question on SONA framework architecture or 3-layer Cisco architecture, or it is talking about PPCN. So आगे जाके बताओ क्या है. So you have the block diagram, you have the entire explanation, you don't have to write anything. Now there is a concept of top-down network design approach and a bottom-up network design approach. So you have to focus on this 5 parameters: starting point, design, flexibility, scalability, and complexity. Now when I'm talking about flexibility, I'm actually talking about, जब मैं बात कर रहा हूँ flexibility, ease of modification. Whatever changes you do should be easily handled. So when I'm talking about top-down approach, top-down, मतलब it starts from understanding client's perspective. Client को क्या चाहिए? Whereas bottom up starts with the perspective, मेरे पास ये devices है, मेरे पास ये technology है, मेरे पास इतना infrastructure available है.
So when I'm focusing upon the design, I would put up a logical design first. मैं कस्टमर से बात करूंगा, कस्टमर को पूछूंगा तेरे को कितने डिवाइसेस चाहिए, उस हिसाब से मैं प्लान करूंगा कितने राउटर्स, कितने स्विचेस, कितने सर्वर्स लगेंगे। Whereas in case of bottom up मैं बोलूंगा मेरे पास इतने सर्वर्स है, इतने स्विचेस, इतने राउटर्स है, यहाँ पे मेरा सर्वर लोकेट होगा, प्री डिफाइंड आर्किटेक्चर इज बॉटम अप. So design, if I'm talking about top down, I will first have design on pen and paper, using pen and paper, then possibly a logical diagram on a digital way, maybe a simulation using a Cisco packet tracer. When I'm talking about bottom up approach, मेरे पास physical layout ready है. ठीक है, imagine a hotel which is a brand new hotel, entirely designed from a customer perspective, tourism perspective, is a top down approach, and a hotel जो मैंने बेचा है किसी और को चलाने के लिए, is actually bottom up approach. मेरे पास infrastructure ready है. Since I'm using a top down approach, मेरे पास एक layout ready है, I will be more flexible to accommodate new aspects, new perspective. In case of bottom up approach, भाई नया मैं कुछ नहीं कर सकता, जो बताया इसमें changes बता. Top down approach scalable है, but bottom up approach scalable बिल्कुल भी नहीं है. But top down will be more time consuming, bottom up ready है, everything is ready, release it. Did you understand both the difference? It's simply building up a new infrastructure as compared to a ready-made infrastructure, and based on that ready-made infrastructure, trying to fix upon our own application. Yes, sir. So I just want, so this part of the question is for the AIDs part, right? Yeah, this is only for AIs. Okay. And so this is model number 5 or 6? Model number 5. Okay, okay, fine. So next one I'm talking about a very important architecture called a Cisco 3-layer hierarchical model. Hierarchical model has 3 layers: core, distribution, and access. Now, what do you mean by core? Core is the backbone. Core is acting as a backbone. Specifically, it is your ISP. Distribution is talking about devices. How you're going to distribute the network. You're talking about concept of subnetting. You're talking about concept of supernets. That is your distribution. And finally, the access layer, it is talking about the end user devices. So how a backbone internet, the ISP, starts providing a network connection, how it distributes to its different subnets, and from that, how end user access the final network is your 3-layer architecture, which is described in detail. कि access मतलब क्या, distribution मतलब क्या, and core मतलब क्या. So all servers and everything will go to the core layer. All switches and routers will come at the distribution layer, and all access points, Wi-Fi router, wireless router, wired routers will come at the access layer. Clear? जो मैंने बताया, the 3 layers of. Now why it is called the hierarchical? Because how you're going to divide कि तुम्हारे पास network कैसे आता है. तो तुम्हारे पास network आता है तुम्हारे access point से, so your access point becomes an access. तुम्हारे access point को कहाँ से आता है? तो ISP के routers and switches से, that becomes the distribution. And उनको कहाँ से आता है? तो उनको servers से आता है, and servers are maintained at the ISP as a backbone, that becomes the core layer. So 3-layer architecture बोला तो ये, सोना बोला तो ये. सोना में भी 3 layer है, service oriented network architecture, and Cisco 3-layer architecture भी 3 layer है, core, distribution and access. ठीक है ना? PPDIO is always there in your paper. PPDIO is always following this approach, called as a top-down approach, not bottom-up approach. As a network engineer, you should be always clear that we should always go for a top-down approach and not a bottom-up approach. So the PPDIO network design model focuses upon prepare, plan, design, implement, operate, and optimize. So prepare में you need to interact with the customer, identify what are the different requirements. Plan में 2 चीजें आती है, planning with respect to cost, so management involved होता है, and planning with respect to customer, so flowchart, algorithms, ये सब design aspect में आता है. Then as per the final approval, you will design, where you include what all different components you need. So kind of a blueprint बनाया जाता है. Once the blueprint is approved by the team, you start configuration, you start laying out all the cables, you start configuring all the servers, all the routers, connecting all the routers. That is your implementation. Once you do that, you will start operating it and you continuously monitor the network performance. And once you understand performance is going up or down, you try to optimize it. And this entire cycle keeps continuing whenever you are including any new feature in the existing network architecture. So this is your PPDIO model: prepare, plan, design, implement, operate, and optimize. And this completes your chapter number 5. If you see any question paper of AIDS, you will hardly find questions like maybe 10 or 15 marks from chapter 5 and 6. Majority is 1, 2, 3, 4. So this is your PPDIO model, and this completes your chapter number 5. Easy, difficult? Easy, sir. Okay, so I believe you are on laptops. I'll just share this file with you. I'll complete chapter number 6 and then I'll share. Yes, sir. Actually, my laptop is set. I'm on mobile right now. You can have the end of the exercise connected by the laptop at the end of the Or else what you can do is you can just ping me on my number. I'll send you on WhatsApp. No problem. So can you send me the second number of the chapter? And I need to. One minute, I'm putting in the chat. Yes, sir. Which one is that one? Sorry, sir. Which college you are in? Sir, what's the college? Look at the number. Okay, sir. Okay. So let me go past question papers. Okay. Okay. So the last chapter you're talking about is software-defined networks. Today's the era where all our cars are also entirely managed by software. The mechanic, if you go to any of the cars in Italy, the scanner line, so it's entirely managed by software. Around 650 line of codes are there in the latest Mercedes EV. So why only talking about a car? The network today can even be controlled entirely by the software. So if you see the traditional network, the switches and the routers, the blue color is the switch and the router. What exactly? The screen is visible, right? No, sir. But it's not shared. It's only showing your logo. Is it visible now? Yes, sir. Now it's visible. Yeah. So what you see in the blue color are the routers or switches. If I'm talking about traditional network, traffic management or any management is done by the control plane, as well as data transfer, upload or download, sending or receiving the data is again done by the data plane, and both are on the same device. So now your device is actually getting overloaded with 2 major jobs: one of a control plane and one of a data plane. And in case of software-defined network, the control plane is shifted as a part of a software separately. And through cloud, all of the devices will be managed, and that software is managing all the switches. So rather than putting a control plane on every node, I've kept a control plane common, which will be through cloud controlling all the devices. The devices will only have a data plane that will transfer the data, and this is done using an open flow protocol. So traditional network, the issue is it becomes pretty much slower for managing the network because the control plane as well as the data plane is on the same device. Here it is shifted. So if you see this architecture, you can see the control plane which is there on your SDN controller. And there are basically 2 types of APIs that generally this SDN uses: northbound API and southbound API. So talking about the overall SDN architecture, SDN has shifted the entire plan of control plane and the data plane separately. The central component called as a SDN controller will be continuously communicating with the networking devices. The northbound API and southbound API. Southbound API is generally going to manage the control plane, whereas northbound API is going to manage the data plane. So northbound for data and southbound जहाँ open flow protocol use होता है. Open flow protocol generally कौन use करता है? Your control plane.
Okay, so more details about it you will learn when you learn ad hoc wireless network. Now there are basically two architectures of SDN, POX and NOX. NOX is your network operating system and POX is Python-based network operating system. NOX is network operating system and POX is Python-based network operating system. NOX जो है ना ये first open source SDN operating system जो SDN control पे डाला जाता है. And POX जो है ना वो same as NOX है. But since it is entirely developed in Python and it is open source, it is much more lightweight as compared to NOX. ये actual difference between POX and NOX. And this completes your chapter number 6. To be very frank, I would say chapter number 6 conceptually करके जाओ, focus more on 1 to 4 and the fifth chapter. तो fifth Okay, chapter में ये तीन चीजें जो मैंने बताई उतना ही करके it is more than sufficient. Yes, sir. Okay, and as I shared my number to you, if you have any doubt, you can definitely connect to me, you can contact me. And next time अगर कोई अपने subject से definitely can connect. I have distributed system, but that is one of your electives. Yes, yes. To district computing, sir. Distributed computing. Yes, yes. I have already applied for that in my college. It is only. Yes. तो semester 8 तुमचा common subject है. हाँ. तो पहला आपण भेटू शकतो. तुला काही doubt असेल, you can definitely connect to me. सर just मला तुझ्या info सांगायचा होता. सर माझा मॉड्यूल 3 पर्यंत माझं आपल्याला लेक्चर व्यवस्थित मी ऐकून नोट डाउन करून सगळं घेतलेलं आहे. माझं मॉड्यूल 4 पण ऑलमोस्ट आलेला आहे. बट एंड एंड नंतर मला लेक्चर अटेंड करायला मला भेटलं नाही बिकॉज ऑफ फॅमिली इश्यूज. पण मी ते सगळे लेक्चरचे नोट्स ना ड्राइव्हर टाकलेले आहेत. Okay. So if you want, I can share the drive link again. मला सगळं ड्रायव्हिंग आहे. बट सर म्हणजे एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू सर माझं या नर्स आपल्याला तर शनिवारी माझी फायनल प्रॅक्टिकल एक्झाम नंतर आय गेस मला समथिंग अराउंड 11 12 डेज आहे त्याच्यानंतर मला फायनल सेमेस्टर चालू होईल. बरोबर. तर सर त्यासाठी काय प्रिपरेशन करू सर कारण मी आपल्या आईचे जेवढे पेपर दिले ना त्याच्यामध्ये सर्वांमध्ये मला मिनिमम 8 मार्क 7 मध्ये भेटले. पण असं का म्हणजे you didn't no. complete नाही केले. नाही सर म्हणजे थोडं झालं नाही मॉड्यूल 4 5 आणि 6 मध्ये थोडं झालं असं कंप्लीट झालंच नाही. तर तू एक काम कर, तुझी प्रॅक्टिकल एक्झाम संपेल ना, ते तुला कॉन्टॅक्ट कर. चालेल आणि तेव्हा मी तुला सांगतो की कशाला असेल फोकस करायला. चालेल चालेल. आणि मी तुला आता ती ड्राइव्ह तुझ्याकडे असेल तर ड्राइव्ह मध्ये AIDS नावाचा मी फोल्डर टाकलाय. येस सर. तर त्याच्यामध्ये तुला हे पण मिळतील आजचे सगळे नोट्स वगैरे. चालेल सर चालेल. काय डाऊट असेल मला सांग. शुअर सर शुअर. ठीक कळलं ना आता? हो आज मला कळलं सर. नॉक्समध्ये फक्त आन्सर क्वेश्चन आला पण या मध्ये पण. ओके ओके येस सर ओके. चालेल.